وسلم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم. صدق الله العظيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. Alhamdulillah, by the fadl of Allah Jalla Majduhu, we all have one of the greatest gift, which is this life itself, because whilst you are living, all doors and opportunities are open. A person can change. A disbeliever can become a believer, a sinner, a pious. A person who have ruined his life or her life, they can make up. That's all due to that they have time and life before the time expires. Because life and death of this dunya is not the beginning or end of existence. It is birth and death, but it's not, that is different matter. That's like going from one room to the other. One is becoming non-existent or existent. That actually happened long before. And to become annihilated and non-existent, now the human beings, they would not actually become like that because they have to live. They will call for death many people who will be in the punishment in the hereafter. But Allah subhanahu wa ta'ala will say, لا تدعوا اليوم ثبورا وثبورا واحدا وادعوا ثبورا كثيرا. It doesn't matter, don't call for even one death, call for many, but the death will not approach you. So imagine a life. Here in this life we think the harshest punishment and everyone fears is death. And then there is such a life, the death is the reliever and it's the relief.
Anyway, in this world, as people plan their month and their New Year's and days and nights, they all revolve around that everyone, Muslim or non-Muslim, they want to live in peace, in happiness, in tranquility, in bliss, in blessings, and they want to enjoy and live a joyful life. And everyone wants to avoid an anxiety, fear, depression, affliction, a state of stress and hopelessness. तो इस दुनिया में काफिर हो या मुसलमान, वो सब ये चाहते हैं कि हमें सुकून, इत्मीनान मिले, परेशानियां ख़त्म हों, गम ज़्यादा ना मिले, परेशानी ख़त्म हो, सुकून मिले, आराम मिले, अमन हो, शांति हो, दिल में भी और ज़ाहिर में भी. तो सब लोग अपने अपने तरीके से इसकी कोशिश करते हैं. People who came to Europe, they came in search of this peace, search of money that will give us good life. A student who goes to university and he studies for, why he studies for so many years? So that he can get a job with which he's satisfied. A drug dealer, why is he selling drugs? So that he can get money. A sinner sins, a robber robs. A politician enters the field of politics because he thinks it will satisfy me. A footballer, a sportsman, different all field, businessmen, they all in their own way, they are trying to achieve this. And we are trying to achieve this. We try to avoid actually this, as I mentioned, an anxiety, grief. And people are trying in their own way. And they can try doing different experiments, Muslims, non-Muslims. But one should know that what Allah subhanahu wa ta'ala, our Creator, have mentioned about stress, about depression, about getting freedom from an anxiety, and getting into the state of pleasure and peace and joy, what Allah subhanahu wa ta'ala mentioned. What others mention, they're all partial things. If we put all the literature together of, for example, non-Muslims who have written on this topic, stress and the thing, the most what they can do is try to get you out of this state only from some worldly things. But no one can do anything about death. No one can do anything if you develop, for example, a cancer. Now how will be you at peace? No matter how much positive thinking you have, and I'm going to fight, I'm going to do this, and etc. I'm going to enjoy my life and this. How long and how much?
if a calamity which is beyond our choice, like earthquakes, car crashes, the air crashes, and other things which are beyond which no one can do nothing about it. So any solution have them? No, they can't. So there's a big flow, there's a big fraud, I would say, that they're selling people that will give you a stress-free life. Really. That itself is a fraud. Muslims, if they do it in their own way, they will also hit a dead end. The Quran uses the word huzn. Huzn means grief. Grief is mostly about depression, is about past. Something has happened in the past. Something has been lost in the past. And then there is, Quran uses the word khawf. Khawf is about future and anxiety, worry. That is to do with the future, what the future holds for me. So no matter how much you put together things, people have seen people who try to live 200, 300 years, they could not actually. They put things together. So this instills more fear that we don't have control over it actually. There are many people who use a lot of wealth and things. But their life ended in a very strange way. So today, I would like to share with you what Allah subhanahu wa ta'ala says, that if you want to become free from these two things, depression and fear for future, तो हर बंदे ने तो अपने अपना तरीका बयान किया, हकीम, फलसफी, साइंसदान, वो अपना भी परेशानी से कैसे निजात मिले, काउंसलिंग करेंगे आपको, ये करो, वो सैर करो, गोलियां खाओ, लेकिन जो है ये उसका कोई हल नहीं इससे होता मसला. अब किसी का बंदा मर गया, अब उसको गोलियां से कितना बंदा हौसला देगा, या खुद मौत आ गई तो क्या अब सुकून उसको, कैसे भाई मुझे मौत आ गई, कोई बीमारी लग गई, कोई परेशानियां, इस तरह की उलझने. तो मुख्तसर ये कि बंदे तो कोशिश करते हैं. आज मैं आपके सामने कुरान मजीद में तकरीबन 11-12 मुकामात ऐसे हैं कि जहाँ अल्लाह पाक ने इसके मुतल्लिक़ बयान किया और इसका बयान फरमाया कि ये ख़त्म हो जाएगी चीज़, ये नहीं रहेगी आप में. There are 11 or 12 places in the Quran where Allah subhanahu wa ta'ala by name mentions these grief, depression, stress and anxiety, worry, all these things, and how the human being can actually become free from them. There are many things which Allah subhanahu wa ta'ala mentions. So very briefly, today I would just like you to simply to share with you those 11 or 12 actually muqamat where Allah subhanahu wa ta'ala uses the word khawf and huzn. Khawf and huzn. Khawf is, he says, la khawfun alayhim, that there will be no fear upon them, meaning the fear will not control them, will not actually paralyze them. It will come, it will go. وَلَهُمْ يَحْزَنُونَ, nor they will, وَلَهُمْ يَحْزَنُونَ, nor grief will overtake them that they are finished now, they are trying to commit suicide now, or they become so much depressed. No, these will be things which come and go and would not affect them as such. So Allah subhanahu wa ta'ala mentioned certain things. So let's begin. One thing where Allah subhanahu wa ta'ala mentioned, He said, الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ لَا يُتْبِعُونَ مَا أَنْفَقُوا مَنًّا وَلَا أَذًى
लहुम अजरुहुम इंदा रब्बिहिम वला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून. सेम वर्ड्स, वला खौफुन अलैहिम, नो फिर, उन पर कोई खौफ और कोई परेशानी, हुज़्न यानी गम भी नहीं रहेगा, गम भी हल्का हो जाएगा और आइंदा का खौफ भी जो है. अल्लाह पाक इसलिए गारंटी दे सकता है कि अल्लाह आखिरत को भी कंट्रोल करता है, मौत को भी कंट्रोल करता है. अब दुनिया में कोई ऐसा बंदा नहीं, वो बीमारी को भी कंट्रोल करता है, कैंसर भी उसके अंडर कंट्रोल है, एड्स भी उसके अंदर कंट्रोल है, दुनिया के तमाम सेल्स, एटम्स, सूरज, चांद, हर चीज़, इसलिए वो दे सकता है. दूसरे तो बेचारे अपना कोई पता नहीं क्या होना है कल. दैट्स वाई द अलेक्जेंडर फ्रॉम मैसिडोनिया, उसको सिकंदर आज़म कहते हैं, when he died, before his death, he issued three advices or will in his will. He said, three things must be done after I die. One is, my body should be carried by the best doctors in all my kingdom, because he conquered almost half of the world, Sikandar Azam, Alexander from Macedonia. So he said, invite the best doctors and they will carry my coffin. वो मेरा कफिन, मेरा जनाजा वो उठा के कब्र तक देख दें. This is my wish. Second is that bring out my wealth and spread it on the roads of this city. Fill the roads with gold and wealth. And the third is that from the coffin, let my hands actually be out of the coffin, spread like this. His ministers and generals, they asked him, why are you asking to do these three things? तो सिकंदर आज़म ने कहा कि मेरी तीन ख्वाहिशात हैं. एक तो मेरा जो जनाजा है वो दुनिया के बेहतरीन डॉक्टर उठाएं, दूसरा दौलत जो है मेरी ये सड़कों पे फैला देना और मिट्टी पे बखेर देना, और दूसरा मेरे हाथ खुले रखना इस तरह. तो उन्होंने पूछा कि आप क्यों इस तरह कह रहे हैं? He said, why I am saying is just to give you the people a lesson that look, I have the best doctors in the world. At that time, the technology or whatever the medical science, that they are carrying my body, they are not able to save me. अगर डॉक्टर सेव कर सकते तो मुझे बचाते, सिकंदर आज़म को बचाते. तो इसलिए मैं चाहता हूं कि वो डॉक्टर जो है वो मेरे जिस्म को उठा के, ताकि लोगों को पता चले भाई इस पे मेडिकल साइंस पर भरोसा करके ना बैठो, ना ये तुम्हें बचाने वाली. ये उस वक्त तक की है जब तक अल्लाह के यहाँ भी जिंदगी है. Secondly, he said, why I want my wealth to be scattered on the roads so that people know the dust has become dust again. Dust has returned to dust again. And the wealth of this world, there's no one rich than me, he said, is going to stay here. It's not worthwhile fighting for it. कि जितनी मैंने सल्तनतें, बादशाहतें, मुल्क कब्जा किए हैं, वो दौलत सारी इधर ही है, साथ नहीं मैं लेके जा रहा, ताकि दूसरों को पता चल जाए, दूसरों को पता चल जाए, the others know कि भाई ये तो इधर है. And that is what one of the great poet of Sufi poet, Sufi Buzurg, Khaja Ghulam Farid, Rahmatullah alayhi, in his poetry from Pakistan, he was a great Sufi Buzurg, like Maulana Jalaluddin Rumi, Rahmatullah alayhi.
he said the same thing as well about dust. And because when he saw someone being put in the grave, and he said, Wake Farida, mitti khulli. That, oh Farid, look, what has opened? Not the grave, dust has opened. It's the dust which is opening. Mitti kulli hai. Mitti utte mitti dulli. Dust has gone into dust. That when the grave is dug, dust has come out. When the person is put in there, dust has gone in. कबर भी मट्टी, जाने वाला भी मट्टी. ये वो देखने हैं. मट्टी हंसे ते मट्टी रोवे. People who are crying, they are also dust. Dust is crying. And people who are smiling, they are also dust. Dust is crying, dust is weeping. कोई पैदा होता है तो फरमाते हैं कि जो हंस रहे, मट्टी हंस रही है, these are people are made of his parents, uncles, aunts are dust. वो मट्टी ही है, मट्टी ही हंस रही है. और मरने पर मट्टी ही रो रही है. Those brothers, sisters, there's nothing. मट्टी हंसे और मट्टी ही रोवे. अंत मट्टी दा मट्टी होवे. The beginning was dust, the end is dust. ना कर बंदिया मेरी मेरी. He says that don't quarrel and debate and fight in this dunya and say me, me and mine, 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 mine. ना कर बंदिया मेरी मेरी. Don't say mine, mine. इससे लड़ो ना. ना तेरी ना मेरी. Nor these things belong to me, nor these things belong to you. 4 दिना दा मेला दुनिया, फिर मट्टी दी ढेरी सब कुछ. He said, all this also, it will be turned into a heap of dust after few days. So the things which we are fighting over, be it gold, be it silver, be it the car, where did the car come from? Where did the house come from? Where did all the luxuries, the sofa, the thing, the computer, everything, where is coming from? Me as well. All from dust. All technology, plastic, silver, glass. So don't fight over. Now don't fight over this is mine, this is your mine and your. इसकी लड़ाई जंग कितनी रहती है घरों में भी. People are fighting, brothers are fighting, relatives are fighting, countries are fighting, humanity is fighting. What if 4 दिना दा मेला? This is like a festival of 4 days. फिर मट्टी दी डेरी. It will become a heap of dust, like Skandar Azam Zulk said actually. ना कर इत्थे हेरा फेरी, मट्टी नाल ना धोखा कर तू. He says, don't defraud, don't deceive here, because you are dust. And who you are deceiving, that is dust. So who are you deceiving? Who you are deceiving, who you are defrauding, that is the dust. And you are dust. And what you are defrauding of, that is dust as well. वो जिसके बारे में धोखा कर रहे हो, प्रॉपर्टी है, जमीन है, वो भी मट्टी, तुम भी मट्टी, जिसके साथ कर रहे हो वो भी मट्टी. मट्टी नाल ना धोखा कर, तू भी मट्टी ओ भी मट्टी. जात पात दी गल ना कर तू, जात भी मट्टी तू भी मट्टी. And he said, don't be arrogant, don't be मुतकब्बिर ना बन. जात पात भाई दूसरा, ये बड़ी जात है, ये छोटा है, ये कमी है, ये फलाने हैं, ये छूत हैं वगैरह वगैरह. इस पर जो, इस बिना पर जो लोग एक दूसरे पर तकब्बर करते हैं, नीचा समझते हैं, वो जलील करते हैं लोगों. फरमाया जात पात दी गल ना कर तू, जात भी मट्टी ते तू भी मट्टी. That is dust, you are dust, he is dust. What is all this arrogance and this boasting about? जात सिर्फ खुदा दी ऊंची. He said the only one highest of high who is not from dust is Allah subhanahu wa ta'ala.
Baki sab kuch matti matti. Everything else in the earth is actually dust, and it will go back to dust as well. So, Sikandar-e-Azam, Alexander, he advised this, that this wish should be followed, that the wealth is scattered, and the third, that hands are left empty so that people know that one cannot take things. So one should share here. So Allah subhanahu wa ta'ala mentions in this verse that one of the ways to get free from depression and free from an anxiety and free from stress and fear, which Allah subhanahu, because as I said, Allah can give you, because Allah controls everything. He controls death as well. He controls life as well. He controls the grave world, the day of judgment, the akhirah. Others, they say we don't know. Let aside controlling, they say we are not sure what's happening. कंट्रोल करना तो बड़ी बात है. दूसरे तो यही कह रहे हैं अभी तक कि हमें पता ही नहीं होना क्या है बाद में, पता नहीं जिंदगी है. उनको ये भी नहीं पता जब, तो कंट्रोल क्या करना है. when they don't even have knowledge, कि भाई sure knowledge that there is. So one of the way Allah subhanahu wa ta'ala mentioned in Surah Baqarah 262, verse 262, الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. Allah subhanahu wa ta'ala says, one way that you can achieve freedom from this grief and all this actually anxiety and stress, the prescription which Allah subhanahu wa ta'ala says, that those who spend not for any other reason but only in a good cause for Allah subhanahu wa ta'ala's sake, they spend on the people. वो लोगों का दिल खुश करते हैं खर्च कर करके. तो अल्लाह पाक फरमाता है तुम लोगों का दिल खुश करो, उनसे कोई तवक्को ना रखो. Don't expect anything from them. لا يتبعون ما أنفقوا منا. Don't remind others once you have spent for Allah subhanahu wa ta'ala. Don't remind them. Don't ask, I've done favor to you. वला अज़ा, and don't torture them by reminding what you done to them. अल्लाह पर एक नुस्खा सुकून हासिल करने का ये है कि जो कुछ तुम्हारे पास है दूसरों पर खर्च करो, सिर्फ अल्लाह के लिए दूसरों को खुश करोगे, अल्लाह तुम्हारे दिल में अंदर भी खुशियाँ दौड़ा देगा. खौफ और हुज़्न अल्लाह पाक वादा फरमा रहा है नहीं होगा तुम्हें. बट वी आर डूइंग द अपोजिट. हम कहते हैं परेशानी से बचो, भाई का भी ज़मीन कब्जा कर लो, बहन का भी हिस्सा मान लो, परेशानी ना आ जाए. सो अपोजिट टू दिस प्रिस्क्रिप्शन व्हाट वी आर डूइंग, फ्रॉड कर लो, ड्रग बेच लो, so that I will have money for tomorrow, for rainy days. Keeping money for rainy days. तो sunny days में भी सुकून नहीं है, तो rainy days में क्या सुकून आएगा. तो sunny days में गलत काम किया, rainy days के लिए sunny days भी गए, rainy days भी गए. So Allah subhanahu wa ta'ala is prescribing that what Allah Azza wa Jal has given you to spend and to enlighten the burden or make the people, the creation of Allah, people, animals, whatever, happy. उनको खुश कर दो अपना माल रिस्क खर्च करके. तो अल्लाह पाक फरमा रहा है कि तुम्हारी भी स्ट्रेस, मैं वादा करता हूँ कि तुम्हें स्ट्रेस ख़त्म हो जाएगी तुम्हारी. आप देख लें ये जो वर्ल्ड में जिन्होंने ये किया, फॉर एग्जाम्पल दोज पीपल हु डज लॉट ऑफ चैरिटी, वो देखे कितने सुकून में है. वो who do charity work, who are spending on the people, or who are doing some welfare work, you won't see them in stress. Although they are living in stressful people, in depressed people, and they're helping the people who are in most need, but they are as though living
in a capsule, an air-conditioned capsule of peace and tranquility. Why? Allah subhanahu wa ta'ala says, I am giving them. La khawfun alayhim wa lahum yahzanun. No fear for the future, nor any grief comes upon them. But the condition is don't think you've done favors to them. Don't remind them. उनको याद ना कराया करो अपने एहसानात करके, उनको बार बार जताया ना करो एहसान जतलाना, to mention the favor. Wala aza, and don't actually torture them mentally to tell them that you are helping them or such. So الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى لهم أجرهم. Now in another part Allah subhanahu wa ta'ala said, another piece similar to that. الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية. 4 things. He said another prescription to gain freedom from an anxiety. That these people, if you're not getting this way, there's another way that you help people. You make people happy, not in the daylight only, but also in night time as well. रात को भी ये बंदा मदद करो किसी की. Sirra, secretly and openly in public. Now देखना 4 चीजें अल्लाह पाक in day and night, secretly and in public. Now our people do not read these verses and things, and then they, for example, say, oh, why this person is spending money at night time? Why this person is spending money in daytime? Why this person is spending money in public? Why is he doing in secret? ये सारे अल्लाह हुक्म दे रहा है, सारे तरीके. So this also, because the risk, someone mentioned, ये जो बारका होती है ना रिस्क में, रिस्क जो है, what is baraka? Anything, everything which Allah has given you is risk. Your wealth, your health, your property, your honor, your money, your talent, your skills, your education, your loyalty, your prestige, your family, etc., etc., etc. Everything is included in. But what is barakah? Allah subhanahu wa ta'ala gives only to few people. Who? Barakah, what does barakat means? Barakat means if that thing, whatever Allah has given you, adds value to your life and takes you up, that is barakah. ये याद रख ले हमेशा. वो कहते हैं ना बरकत मिले इस चीज़, बरकत का ये नहीं ज़्यादा चीज़ हो. बरकत का माना है कि कोई चीज़ अल्लाह ने दी है वो आपको पहले से ऊपर अल्लाह के करीब ले जाए और आपकी ज़िंदगी को बेहतर बना दे, ऊपर ले जाए, उसको कहते हैं बरकत मिल गई इसको. और अगर पैसा मिल गया, इज़्ज़त ख़त्म हो गई, ज़लालत शुरू हो गई, जेलों में धक्के खा रहा है बंदा, तो बरकत क्या, वो तो नहुसत, लानत हो गई. वो रिज्क तो ना हुआ. तो रिज्क असल तो बरकत वाला रिज्क है. तो रिज्क actually which takes you upwards, which takes you more higher, which adds value to your life, your spiritual life, your physical life, your social life. It adds value to you. वो रिज्क है असल में. अगर वो add value नहीं कर रहा, is taking away value from you, वो फिर बरकत नहीं है, ना ही रिज्क है. सही वो. तो रिज्क कौन सा बरकत वाला है कि जो बंदे को ऊपर ले जाए, बंदे को अल्लाह के करीब कर दे, बंदे की इज्जत, बंदे की नेकी में इजाफा हो जाए, ये सारा चीज. सो दैट्स अल्लाह सुब्हान. ये दूसरी बात फरमाई. देन इन अनदर वर्स इन सूरत बकरा अल्लाह सुब्हानहू व तआला सेड, फमन तबिया हुदाया फला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून. Verse 38 of Surah Al-Baqarah. That Allah subhanahu wa ta'ala mentioned that one way of becoming stress-free is to follow the one who does not have stress. Who is that? Allah subhanahu wa ta'ala.
Allah says, follow me what I have sent down, the wahi, the guidance, and navigate. You will navigate through this life towards the heavens without stress and depression and fear and anxiety. तीसरा नुस्खा ये फरमाया कि फमन तबिया हुदाया, whoever will follow my guidance. He says though following Allah subhanahu wa ta'ala. फरमाया कि ये है रास्ता. Fourth one, in another verse of Baqarah, after few verses, some 10 verses, Allah subhanahu again says, Man amana billahi wal yawmil akhir wa amila salihan falahum ajruhum inda rabbihim wala khawfun alayhim wala hum yahzanun. He said, the one who wants stress-free anxiety, he should make sense, he should have purpose in life. And the purpose of life will give meaning to you when you will believe in Allah subhanahu wa ta'ala. Everything will make sense to you. हर चीज का मतलब समझ आ जाएगा क्यों क्या कुछ हो रहा है. Man amana billah, whoever believes in Allah and the day of judgment, life will make sense to you. And then wa amila salihan, and then do the acts which are good, those good acts and the right beliefs. Wala khawfun alayhim wala hum yahzanun, that will also take the grief away from you, stress away from you. Ask those people who truly believe and who truly do righteous deeds कि उनकी जिंदगी कैसी है. पैसे हैं या नहीं है, दौलत है या नहीं है, money people they have or not, they have cars or not, meaning these things do not actually bother them as such. Another sixth one verse of Surah, again in Surah Baqarah, Allah subhanahu wa ta'ala mentions, Man aslama wajhahu lillah wa huwa muhsin falahu ajruhu inda rabbihi wala khawfun alayhim wala hum yahzanun. It's mentioned that why the stress and grief comes to you, because actually you expect from people, you expect from things, तुम चीज़ों से और लोगों से उम्मीदें रखते हो, फिर वो टूटती हैं तो फिर तुम रोते हो. दिल लगाते हो लोगों से, वो मिट्टी से, फिर जो है वो मिट्टी टूट जाती है, बर्तन मिट्टी का, फिर तुम रोते हो. So one of the reason of grief and stress, because when our heart is attached to these things, and when then something happens, then actually our peace also goes away. So in this verse, Allah subhanahu wa ta'ala says, Man aslama wajhahu lillah, whoever turns solely, 100%, who lives his life and his purpose is only Allah subhanahu wa ta'ala, he will never have stress and anxiety, because Allah never breaks, Allah never actually becomes absent, and Allah subhanahu wa ta'ala never loses any power. He never forgets, he never lets anyone down. So there is no reason left actually why the person will go in stress. So मैं एक ये भी नुस्खा है कि सिर्फ खालिस अल्लाह के लिए हो जो. One person asked the Prophet alayhi salatu wasalam, yes, a question. The question is like, when people have different, like Jews and Christians at that time, they were five religious people. Worldly people can be understood. They're fighting over land, property. But why are these religious people fighting? Or let me make it more. Why are Muslims actually fighting Muslims? Mosque is against the madrasa is against other madrasa and things. Why is there going fighting there? The answer which was given was that because all these who are fighting, they do not have sincerity. Ikhlas nahi hai. Because they have vested interest in something. Sometimes there's worldly interest, sometimes there's religious interest. So a madrasa might go turn against another madrasa because actually their students are more
or they are getting high reputation. Similarly, even if you do something for spiritual enlightenment, yeah, I want to be high spiritually, रूहानी तौर पर भी फरमाया रूहानी दर्जे के लिए इबादत ना करो, फिर भी तुम आपस में लड़ोगे। रूहानियत के लिए भी ना करो। क्यों? शैतान की जो लड़ाई आदम अलैहिस्सलाम से थी वो पैसे के लिए, औरत के लिए, जन्नत के लिए नहीं थी, वो रूहानी दर्जे के लिए थी। If you think deeply, Shaitan's disobedience, the source of that was not that he wanted to have more hoods, or there was a piece of land in paradise, or it was about Jannah, it was about actually this physical status, it was about spiritual status. He said, why Adam alayhi salam have more high status spiritually than me? I want more high status. So the answer was given from the Prophet ﷺ, actually, that those people who will be saved will be the only ones who do things only for Allah, not for worldly fame, not for even reward, not for even spiritual blessing, not for even religious advancement, but only for the sake of Allah subhanahu wa ta'ala. They are not bothered. If a person is doing, you get, this brother say, I become Qutb. If I'm doing things for Allah, why does it bother me? I say, yeah, it should be 10 times more higher. Because Allah is on side, no one can reach Him. But if I say, I want to have His status, I want to be MP politically or spiritually, I want His status, then there will be jealousy, then there will be infighting. तो ये मस्जिदों में, मदरसों में और ये लड़ाइयाँ भी इसी वजह से हो रही हैं कि वो हर एक अपने कोई ना किसी ओहदे के पीछे, कई रूहानी ओहदे के पीछे पड़े हुए हैं। मैं खतीब बन जाऊँ, मैं इमाम बन जाऊँ, मैं मुफ्ती बन जाऊँ, दूसरा क्यों आ गया। कोई जो है वैसे मस्जिद के प्रेसिडेंट और सेक्रेटरी, वो कहते वो अपने लड़ाई में लगे हुए हैं, वो अपने ओहदे हैं उनके, रूहानी वालों के अपने ओहदे हैं। तो अल्लाह के लिए कौन फिर इबादत कर रहा है? हु इज़ वर्शिपिंग अल्लाह सुब्हानहू व तआला फॉर अल्लाह? तो जो अल्लाह के लिए कर रहा है उसके लिए अल्लाह काफ़ी है। डूइंग फॉर अल्लाह, अल्लाह इज सफिशिएंट फॉर हिम। उसको ये छोटी मोटी प्रेसिडेंसी किया तो द होल वर्ल्ड डजंट एक्चुअली कम टू हिज फीट। उसके कदमों के बराबर भी नहीं सारी दुनिया की हुकूमत। तो ये अल्लाह पाक ने इसमें फरमाया, मन अस्लम वजहहु लिल्लाह, कि तुम खालिस हो जो अल्लाह के लिए, अल्लाह की तरफ रुख करो। तो देखो तुम्हें जब किसी से तवक्को ही नहीं, ना किसी से उम्मीद, ना किसी के आने की खुशी, ना किसी के जाने का गम, बस एंड ऑफ द स्टोरी। Another verse Allah subhanahu wa ta'ala mentioned, innallazina amanu wa amilus salihati wa qamus salah wa atuz zakah lahum ajruhum 'inda rabbihim wa la khawfun 'alayhim. This is Surah Baqarah 2, Surah 2, verse 277 again. So here Allah subhanahu wa ta'ala mentions again Iman, Amal Salihah, wa aqamatus salah wa atawuz zakat. Qamus salah wa atuz zakat. Lahum ajruhum. So here there are two additional things, that iqamatus salah, establish salah, like I say again and again. I think maybe I have not mentioned here, but in many my khutbahs I mentioned that there is difference between offering the salah and establishing the salah. कि नमाज पढ़ने में और कायम करने में फ़र्क है बहुत। अल्लाह ने नमाज पढ़ने का हुक्म नहीं दिया हुआ, नमाज अदा करने का हुक्म नहीं है, ज़कात अदा करने का हुक्म है, नमाज कायम करने का हुक्म है। अल्लाह हैज़ नॉट सेड that you should offer salah, you should read salah, but said you should establish salah. What is the difference? Very briefly, फर्क क्या है पढ़ने में, कायम करने में, between offering and, हमने अभी जो इशा की नमाज पढ़ी है या कायम की है? Have we established it or have we read it, offered it? तो हमें कोई पता नहीं। तो इसीलिए फिर जो है असर भी फिर उसी तरह का होगा। The difference is, look, when I am offering the salah, where am I looking? Where sajda place?
Where are my hands? Here or here, according to different fiqh. Mazahib. Where are my feet? Straight towards the Qibla. Where is my face? Towards the Qibla. Am I eating anything? No. Where are my hands? The hands are here. Everything actually here. And what is my tongue? My tongue is doing different azkar. That's called offering the prayer. That's called reading the prayer. इसको कहते हैं नमाज पढ़ना. Namaz qaim karna, the established salah means when my life after the salam comes in line with my life inside the salah, then the prayer is established. जब मेरी जिंदगी जो बाहर है नमाज से, मस्जिद में ही बेशक मैं बैठा हूँ, वो इन लाइन आ जाए, जिस तरह मैं अंदर था नमाज के उसके मुताबिक आ गए, तो नमाज कायम हो जाती है. वरना नमाज ऑफर कर रहा है बंदा, पढ़ रहा है, कायम नहीं की. अल्लाह का हुक्म है कि कायम करो. फॉर एग्जाम्पल, लेट मी एक्सप्लेन मोर. जिस तरह मेरी आंखें नमाज के अंदर वो देख रही हैं, ये ट्रेनिंग हो गई, तो नमाज के बाहर भी माई आईज शुड रिमेन इन ओबीडियंस ऑफ अल्लाह. अगर वो नीचे ही रहें जहां अल्लाह ने हुक्म दिया हुआ है, तो नमाज कायम हो गई. इफ दे डोंट, देन नमाज इज नॉट एस्टैब्लिश्ड. If my hands are like used here, I'm not harming anyone. If outside the prayer, my hands are tied from all sins and all harms, my prayer is established. अगर नमाज के बाद भी मेरे हाथ बुराई से बंधे रहें, ना उठें गलत किसी पे, तो नमाज कायम हो गई. नहीं तो नमाज सिर्फ पढ़ी है. पढ़ने वाली नमाज कबूल नहीं होती, कायम करने वाली कबूल होती है. पेट में मैं हलाल भी नहीं खा रहा. इन द प्रेयर, इन द सलाह, आई एम नॉट इवन ईटिंग. हलाल भी मुझ पर हराम हो गया. आई एम नॉट इवन ईटिंग हलाल. इसी तरह नमाज के बाद जब मैं हराम से बच जाऊं, नमाज हैज बिकम एस्टैब्लिश्ड. नमाज कायम हो गई जब हराम से बच गया. नमाज के अंदर मैं बीवी को भी हाथ नहीं लगा रहा. When I am in the prayer, I am not even touching my wife, lawful wife. Now, if outside the prayer I do not have any relationship with extramarital, any na-mahram, then the prayer is established. फिर वो नमाज कायम हो गई. वरना फिर नमाज पढ़ रहा हूँ और क़यामत के दिन बंदे जाएंगे, ए जी फरिश्ते के तुमने नमाज ही नहीं, नमाज तुम्हारी है ही नहीं. मैं तो पढ़ता रहा हूँ, पढ़ने का तो हुक्म ही नहीं था. कहाँ एक जगह भी है कुरान मजीद में जहाँ अल्लाह ने ये हुक्म दिया पढ़ो. युकीमुस्सला, अकामुस्सला, इकामतुस्सला, यही लफ्ज़ आते हैं बार बार. पढ़ने वाले होते हैं. मुनाफिकीन का जहाँ जिक्र आया वहाँ पढ़ने का जिक्र है कि वो पढ़ते ही हैं. एक बंदा आया तो वो कहने लगा, साहब मैंने नमाज भी पढ़ता हूँ, लेकिन सुना है नमाज बुराई से, बेहयाई से रोकती है. तो मैं तो कोई नहीं रुका. तो मैंने कहा आप पढ़ते हैं इसीलिए तो नहीं ना रुके. यही तो मेरा सवाल है. तो मैं कहा पढ़ते हैं ना आप, कायम नहीं ना किया आपने. कायम की होती तो फिर रुक जाते ना. आप पढ़ते रहें, आप सही हैं, ज़्यादा दफ़ा पढ़ते रहें. सो बेसिकली, ब्रीफली, व्हेन योर लाइफ आउटसाइड द सला comes in line with inside the salah, the prayer becomes established. यही कबूलियत के नहीं. लोग पूछते हैं किस तरह पता चले रोज़े कबूल हो गए हैं, हज कबूल हो गए हैं. मेरे तो उनको मैं यही कहता हूँ that if your life outside the Ramadan comes in line with inside the Ramadan, your Ramadan is accepted. If your life whilst doing Umrah, how when you were doing Umrah you were so vigilant and haram bhi band hai, खुशबू नहीं लगा रहे, ये नहीं कर रहे. If your life outside the Umrah comes in line with inside the Umrah, your Umrah is accepted. इसी तरह हज, इसी तरह रोज़ा. रोज़ा भी नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, a person who does not abandon sinful speech, sinful action, Allah does not need his stop him from eating and drinking. This means the fast also is that fast accepted. All ibadats, all worships are the sign of acceptances.
that outside that worship, that life comes in line with inside how you did it. That is the sign. क्योंकि नमाज तो ट्रेनिंग है, इकामतुस सलाह तो बाद में आनी है. इसी तरह. So here Allah subhanahu wa ta'ala mentioned that after Iman and Amal Salih wa aqamus salah, that they establish the salah, wa atuz zakah, and they give to the creation and fulfill their rights. Wala khawfun alayhim wala hum yahzanun. No fear and no grief will be upon them. इनका. तो हम जब नुस्खा ही इस्तेमाल ना करें तो फिर अपना क्या होगा? And then in another Surah Al-An'am, Allah subhanahu wa ta'ala mentioned about those people who have wronged themselves. हम गुनाहगार लोग हैं, बार बार गलतियां करते हैं, ज़्यादतियां करते हैं. तो अल्लाह ने फरमाया कोई बात नहीं. हाँ, फमन आमना व अस्लहा. Yes, you have gone on the wrong path. Come towards the right path. Come towards the iman wa aslaha, and correct yourself. Purify yourself. Wala khawfun alayhim wala hum yahzanun. Nor there will be fear and nor there will be grief. And then Allah subhanahu wa ta'ala azza wa jal has mentioned another way of relieving yourself from fear and anxiety in Surah Yunus. Surah Yunus में अल्लाह पाक ने फरमाया, अल्लाह के अजीम नबी की वो सूरत है कि one way that your fear and an anxiety can be removed is मुझसे दोस्ती कर लो. अल्लाह पाक ने ये कुरान मजीद में है कि फरमाया कि जो मुझे दोस्त बना ले, जो मेरा दोस्त बन जाए, जो मेरा दोस्त बन जाए, उस पर भी खौफ और हुज़्न नहीं मैं रहने देता. अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून. हमने दोस्ती की हुई है गर्लफ्रेंड से, दोस्ती की हुई है प्रेसिडेंट से, फ्रेंडशिप की हुई है फलाने फलाने से गैंगस्टर से, फलाने फलाने पॉलिटिकल लीडर से. तो वो तो खुद सुकून के पीछे भाग रहे हैं. उन्होंने हमारे क्या दूर करनी है, वो जो है वो भी ले लेंगे. तो फरमाया कि उससे दोस्ती करो जो सिर्फ देने वाला है तुमसे. Become a friend of someone who only gives, who never takes, who never actually asks anything as such from us, who needs nothing, who is someone. So my one way of removing, become my friend when you become, and it's a very good, because one एक बुजुर्ग के पास एक बंदा गया, कहता कौन सी हजरत साहब मैं दुआ मांग रहा हूँ, अल्लाह मुझे नेक बना दे, नेक बना दे. वो अल्लाह मेक मी पायस. तो वो फरमाने लगे हमने नेकों को बद भी बनते देखा है, नेक तो बद भी बन जाते, ये तो कोई इतनी बड़ी आला दुआ नहीं कर रहे तुम. It's not the best of the prayers, because we've seen many pious people who turn non-pious. कितने मुसलमान काफिर हो गए हमने ये देखा. We've seen many people with good deeds and they have gone towards bad deeds. Many people who gone very high status and they've gone low. तो उसने कहा फिर क्या दुआ करूँ कि या अल्लाह, ये दुआ करो कि ए अल्लाह मुझे अपना दोस्त बना ले, पसंदीदा बंदा बना ले, मुझे अपना पसंदीदा बंदा, make me your best friend, make me your beloved, the one who you like. Because if Allah will like you, nothing will harm you. कि अल्लाह तुम अल्लाह के पसंदीदा बन गए, अब कोई चीज़ तुम्हें नुकसान देने वाली नहीं, अल्लाह वो तुम्हें बचाएगा. सिर्फ नेकी के पीछे भागते गए, नेकी नहीं तुम्हें बचा सकती, इबादत नहीं बचा सकती, रूहानी दर्जा नहीं बचा सकता, तकवा तहारत ये चीज़ें नहीं बचा सकती. ये तो अमाल हैं. तुम कहो कि या अल्लाह तू मुझे पसंद कर ले, एंड व्हेन अल्लाह विल लाइक यू ही विल सेव यू. तो यही औलिया अल्लाह का वाला फरमान, अला इन्ना औलिया अल्लाह, verily listen, Allah subhanahu wa ta'ala says that if you become my friends, my beloveds, then I will not let any fear and grief come upon you.
And another verse, Inna alladhina qalu rabbuna Allahu thumma istaqamu fala khawfun alayhim wala hum yahzanun. In Surah Al-Ahqaf, Allah subhanahu wa ta'ala says in verse 13 that those who have believed Allah is their Lord, sustainer, Allah is their sustainer, and they focus on Him only, they will also have no fear and no grief, because they are focusing who is their sustainer, Allah. If we lose anyone, anything, who can compensate? Allah subhanahu wa ta'ala. फरमाया जिसने ये समझ लिया और ये मान लिया, इस पर फोकस और इस्तिकामत इख्तियार कर ली कि अल्लाह मुझे हर चीज़ दे सकता है, हर चीज़ जो है वही मेरा रब है, इस पे इसका तवज्जो रही, तो उसको खौफ कैसे होगा कि उसका तो दोस्त सब कुछ उसके पास है, उसको फ़िक्र की क्या ज़रूरत है बंदे को कि अल्लाह इज़ रहमान। जिस तरह अल्लाह पाक ने यहाँ फरमाया कि मखलूक पर रहम करो। रहम, यू नो रहम, where does the word रहम come from? रहम करना कहते हैं सिलातुर रहम, meaning keeping your relatives of womb, they are called relatives. रहम जो है ये womb को कहते हैं अरबी में। रहम, womb, where the baby, the fetus and the baby grows. माँ के पेट में जो होता है, the womb of the mother is called रहम। तो रहमत किसी को कहते हैं कि हम भी दूसरे के लिए रहमत बने, कि look how the womb protects the baby. बेबी कुछ कहता भी नहीं है कि मुझे प्रोटेक्ट करो, बेबी कहता है मुझे प्रोटेक्ट करो, नहीं। सो रहमत, रहम, mercy means that you don't wait for people to ask you to protect them. No, without asking, but according to your knowledge, you protect them. ये रहम। बेबी नहीं कहता कि मुझे चीज़ चाहिए, वो तो बोल ही नहीं सकता। The baby does not say, I want sustenance now, I want this nourishment now, etc. etc. वो उस तरह, लेकिन जो है उसको ऑटोमेटिक पहुंचाया जा रहा है। माँ तकलीफ में भी होती है, कम भी होते हैं उसके पास चीज़ें, फिर भी उसको ग़िज़ा उसको पहुंच रही होती है। Baby is playing around in the womb, but the womb is protecting. People also play around with you sometimes. लोग भी खेलते हैं। वो कई दफ़ा तो बच्चा है जो माँ के पेट में है, वो टांगे मार रहा होता है आखिर में, लेकिन फिर भी वो प्रोटेक्ट कर रहा होता है हर किस्म की चीज़। तो ये रहमत में ये खसूसियात पाई जाती है। विदाउट आस्किंग यू हेल्प, विदाउट आस्किंग यू, इवन दे आर नॉट वेरी, दे डोंट इवन नो, बेबी को पता भी नहीं है माँ क्या है। बेबी डजंट नो व्हाट्स द मदर, हु इज़ द मदर, हु इज़ दिस वॉर्म फॉर, उसको पता ही नहीं, लेकिन रहम उसकी हिफाजत कर रहा है। The womb is protecting us. So do it solely for the sake of Allah. Even people do not know who is doing this, who is helping them, who is protecting them. So like the rahim is not bothered, the baby knows or not. What ये सारी चीज़ें, इसको कहते हैं रहम। And Allah subhanahu wa ta'ala is a Rahman. His name, Rahman, is like that it in a circle covers whole the creation. रहमान को आप सोचे ना, रा हा मीम नून कैसा है कि वो सारा गोलाई में सारी मखलूक को अहाता किए हुए है। एंड देन अर्रहीम, द रहम गिवर, वो फिर रहमत को तकसीम भी फरमाता है। अमन, तो ये बंदा जो बन जाए, अल्लाह पाक फरमा रहा है यहाँ इन आयतों में जो पहले पढ़ी थी, that person who does this, who becomes like this towards the creation, he will become free from an anxiety and यही चीज़ें। और भी नबी अलैहिस्सलाम ने भी कई चीज़ें और फरमाई हैं, but I thought I will directly let you listen to the words of Allah subhanahu wa ta'ala, and Allah is repeating again and again that these are the prescriptions. इनमें से कोई एक भी आप नुस्खा अपना लें, अल्हम्दुलिल्लाह आप दुनिया पे आ जाएंगे। person will be free, he will become a free person.
جزاكم الله أحسن الجزاء. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. ما شاء الله. الله أكبر. اللهم صل وسلم. Assalamu alaikum, dear brothers. Have you heard, as you have heard from Hazrat Sahib, the point is how to free yourself from stress and anxiety. Alhamdulillah, all these are taught in this center, how one can achieve these very points. And one of the points that were made was how to become the friend of Allah Azza wa Jal. And there is a course of self-purification which is taught under the guidance of the teacher, how one can step by step lead yourself to the pleasure of Allah Azza wa Jal and how to become a friend of Allah Azza wa Jal. So there is this course and it's taught absolutely free. And it's tailor-made for each every individual for whatever your circumstances are. Mm-hmm. So it's one thing to just to listen and there's another to act upon it. So you can take something away with yourself today. If anything that was said that inspired you and you want to get closer to Allah Azza wa Jal, you want to become friend of Allah Azza wa Jal, there is this course of self-purification which is taught. And like I said, absolutely nothing is required from you other than the will that you want to change. So if you have that will, alhamdulillah, after the zikr majlis, I will be here. I will sit with you for 10-15 minutes and I will show you this course of self-purification, how it's taught, and it's taught absolutely free. So it only takes about 15 minutes. So if you approach me after the zikr majlis, I will be here at the front here and I will go through with anyone who is interested. Alhamdulillah. Also, I'd like to mention that the teacher they've just returned from Umrah trip just this week, and they're heading to an international conference all over Pakistan, starting from end of the week as well. So they will be gone all the way into March. So they'll be going for over a couple of months. Again, please keep yourself posted for the latest updates on Sheikh Ahmad Dabagh Facebook page. For the latest updates on there as well. And if you have family in Pakistan, inform them of their trip, and so they may benefit as well as you have benefited from being in their gathering. So inform your family and friends in Pakistan as well. And when you go on the Facebook page, alhamdulillah, share the posts and the videos and motivational videos. Everybody has, and if you don't have the time to travel or sacrifice money, the least you can do is just forward the motivational videos, and that's your part to spreading the message of the deen. And that is the whole purpose, to do da'wah, that this is the work of the Anbiya, and it's a responsibility not just on the teacher, but on every single person, individual here. So we should all, we post, comedy video clips and jokes very quickly, but we should be posting these, and whatever you post will remain in your scroll of deeds for eternity. So it's so important, and it doesn't cost anything, just a little forward. So when you hear these motivational videos and speeches, just post them onto your contacts and your family and friends, and inshallah they will be preserved forever as well. And also, there is a fantastic special spiritual retreats for brothers in Oldham and for sisters in Bradford as well. So there is this spiritual retreat, and it's not to be missed. It's so important. It's really one-offs, and it's so important. Things like, what is the retreat about? Let's start by asking, do you believe in the unseen? Do you want to increase your belief? Do you want to see the unseen? And if you do, come and have a first-hand experience, once-in-a-lifetime opportunity. These opportunities don't come, and this knowledge, it's not taught everywhere, and very few people seek this knowledge and experience it firsthand yourself, and come to these spiritual retreats. It's so important not to be missed. And if anybody is interested, then please contact Brother Omer or Brother Gulfam, and if you don't know who they are, if you come and approach me, I will show you the brothers who are in charge of that.
Inshallah, now we will be having the zikr majlis. So if all of you want to start. Bismillah. So, inshallah, as Brother Shafiq mentioned, that this very important announcement from amongst them is that we are living in a Europe. There are so many different kinds of beliefs, different kinds of ideas coming. So sometimes shaitan puts waswasa in the person about existence of Allah, existence of akhirah, paradise, hell, belief system. So what we say to our young people or others, that how here in this 2-day spiritual retreat, it is designed as such that you are given first-hand experience, that your inner eye is opened by the fadl of Allah subhanahu wa ta'ala through the muraqabat and the methodology, if a person does it correctly. And you can experience for yourself some of the unseen realities which you cannot be seen with these eyes, like angels, like punishment in akhirah, hell, paradise. So imagine going into 2 days and then experiencing this actually. So if you experience an opening of another eye which you can see, like you have a mobile phone and you can see many, many things on the internet. Similarly, the inner eye which Allah has given you of the heart is much more powerful. It just needs cleansing and opening, and that can be done or taught in 2 days, from Friday to Sunday. So especially the youngsters, I would request them that once in a lifetime it will change their life forever, and then you won't have to struggle so much that actually to do good deed, to avoid that, because actually the results and the scenes will be in front of you. That is why we are going towards dunya, captivate, because we can see dunya, we can taste dunya, we can experience, we can see the beauties of dunya. In that, your belief is taken upwards to the level that you also have some kind of spiritual experience, not me, not the teacher, but you yourself. So if you are brothers, then you can also participate in all them. And if there you have sisters or who say, people question even that, oh, what's the proof the God exists? What's the proof angel exists? What's the proof paradise? You say, come, we'll show you. End of the story. They don't argue, they don't need to debate. Debate comes when you logical proof you want and you can't show them. And you can show, what's the belief, there's a tissue, here it is. So, what's the debate about now? Actually, तो वो इस तरह की है. So all those, even your Muslim friends or who are weak iman or whoever, and they can come, and if they are come with open heart, alhamdulillah, they can achieve that. Almost in them 70 to 80% actually people do actually achieve, and those who do not, they can achieve in the next one by removing blockages. So it is a unique gift for actually all those people who already believe, alhamdulillah, it is a fadl, but once they will see for themselves, their belief will go even more higher, because now they've experienced it. So that's the retreat he was talking about. So 18 to 20, so Friday evening till Sunday evening in Oldham, and for sisters in Bradford in the seclusion in a particular way. So hai, jazakumullah sana jaza. Subhanakallah wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka. Now, my dear brothers, you can stand up and just let some blood rush down to your feet. There's a few etiquettes of the gathering of zikr, so I will just mention a few. The first is the 3 keys that Allah Azza wa Jalla is with me, watching me and hearing me. Imagine the name of Allah Azza wa Jalla above the gathering. Imagine the name of Allah Azza wa Jalla illuminating, and the light is descending upon the teacher, onto the masjid, onto the teacher, and then it is illuminating the whole masjid and it's enlightening you. Imagine the light entering into you, into your veins, into your body, eradicating the darkness that we've been accumulating during the week. Jazakallah. Jazakallah.
मैं शुरू करूँगा तो फिर आप फिर أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك
بك خير الخلق كلهم. محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم. محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير فاعلم أنه لا إله إلا الله محمد رسول الله. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. 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 لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. 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 لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. لا إله
إلا الله لا إله إلا الله حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله لا إله إلا 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 الله 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 الله Allah
हाफिज़ व नासिर है अल्लाह, अव्वल व आखिर है अल्लाह, ज़ाहिर व बातिन है अल्लाह, अव्वल व आखिर है अल्लाह, अव्वल व आखिर है अल्लाह, ज़ाहिर व बातिन है अल्लाह, हाफिज़ व नासिर है अल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, 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 ला इलाहा इल्लल्लाह, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम अलैका, या हबीब सलाम अलैका, सलावतुल्लाह अलैका, या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम अलैका, या हबीब सलाम अलैका, सलावतुल्लाह। तेरे आने की खुशी में, तेरे आने की खुशी में, तेरे आने की खुशी में, दो जहान मुस्कुराए, जिब्राइल मुस्कुराए कि हजूर आज आए, या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम अलैका, या हबीब सलाम अलैका,
तेरी जूस्तजू में मरना यही मेरी जिंदगी हो, यही मेरी बंदगी हो। या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम अलैका, या हबीब सलाम अलैका। सलावत है ये आरज़ू बे अहमद, है ये आरज़ू बे अहमद के जब आए रोज़े महशर ये तेरा गुलाम आह कर पढ़े दस्त बस्ता हो कर। या हबीबी या मुहम्मद या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम अलैका, या हबीब सलाम अलैका। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि वसल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि वसल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि वसल्लम। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन। अल्लाहुम्मा रब्बना तक़ब्बल सलातना व दुआना व अज़कारना व सलावातना व तस्बीहना व जमी इबादतना या अरहमर राहिमीन, कमा तक़ब्बलत मिनन नबिय्यीन व सिद्दीक़ीन व शुहदाई व सालिहीन। अल्लाहुम्मा या मुसर्रिफ़ल क़ुलूब सर्रिफ़ क़ुलूबना अला ताअतिक, या मुक़ल्लिबल क़ुलूब सब्बित क़ुलूबना अला दीनिक। अल्लाहुम्मा या रब्बी बिजाहि नूरि वज्हिकल करीम व बिफ़ज़्लिकल अज़ीम इज्मा बैनना व बैनक फ़िद्दुनिया क़ब्लल आख़िरह। अल्लाहुम्मा इग़फ़िर लना वरहमना वहदिना वआफ़िना वरज़ुक़ना। या रब्बल आलमीन या अरहमर राहिमीन, अपने फ़ज़ल और करम व एहसान से हमारी ये मजलिस दरूद व सलाम ज़िक्र अज़कार अपनी बारगाह में कबूल फरमा। या रब्बल आलमीन, तेरे गुनहगार बंदे हैं, इस मजलिस में तेरे नेक बंदे भी हैं। हमारे पास तो कोई ऐसा अमल नहीं जो तेरी बारगाह में पेश कर सके, कोई इल्म नहीं, कोई ज़िक्र नहीं, कोई इबादत नहीं, सिवाय तेरे फ़ज़ल और रहमत और तेरे हबीब अलैहिस्सलाम के वसीला से। ये जो नेक लोग हैं, इनकी अमाल की बरकत से हम गुनहगारों पर भी रहम फरमा।
या रब्बल आलमीन, जो यहाँ आए हैं जिनका आज तज़किरा हुआ है, जिन नेक लोगों का, उन लोगों का कि जिन पर ना कोई खौफ होगा, ना कोई गम होगा, ना दुनिया ना आखिरत में, हमें भी उन लोगों में दाखिल फरमा। या अरहमर रहीम, हमें भी वो सिफ़ात मुहम्मदिया नसीब फरमा, अखलाक़ मुहम्मदी नसीब फरमा, अहवाल मुहम्मदी से हिस्सा अता फरमा, अपनी अपने हबीब अलैहिस्सलाम की मारिफत नसीब फरमा, अपना इश्क, अपनी मोहब्बत नसीब फरमा, हजूर अलैहिस्सलाम की मोहब्बत, अहले बैत अतहार, सहाबा इकराम रिज़वान अजमईन, औलिया की मोहब्बत नसीब फरमा, उनका इत्तबा नसीब फरमा, उनकी शफ़ाअत नसीब फरमा। या अरहमर राहिमीन, हर एक की जान में, माल में बरकत अता फरमा, इज़्ज़त में, औलाद में, घर में बरकत नसीब फरमा, हर एक की परेशानियों को आसानियों में तब्दील फरमा, हर एक को गमों को खुशियों में तब्दील फरमा, तंगी को फराखी से या रब्बल आलमीन तब्दील फरमा, आसानी पैदा फरमा, हलाल रिज़्क़ वाफ़िज़ मिक़दार में अता फरमा, जो नेमतें तूने अता फरमाई उन पर शुक्र की तौफ़ीक़ अता फरमा, उनमें बरकत अता फरमा, जो बीमार हैं उनको शिफा नसीब फरमा, जो रूठे हुए हैं उनको मना, जो लड़े हुए हैं उनको सुलह की तौफ़ीक़ अता फरमा। हमारे पास इल्म नमी, अपने पास से इल्म अता फरमा, हम नादा हैं, हमें हिकमत और दानाई नसीब फरमा, हाँ ये हमें बर्दाश्त नहीं, हमें हिल्म नसीब फरमा, अपनी सिफ़ते हिल्म से हिल्म नसीब फरमा, अपनी सिफ़ते सबूर से सब्र नसीब फरमा, अपनी सिफ़ते इल्म से इल्म नसीब फरमा, अपनी सिफ़ते शुकूर से हमें भी शुक्रगुज़ार बंदों में दाखिल फरमा। या अरहमर राहिमीन, हमारी मग़फ़िरत फरमा, हमारे वालिदैन, तमाम मुसलमान मर्द और जिन व इंस की मग़फ़िरत, तमाम मुसलमान मज़लूम जहाँ दुनिया में भी हैं या रब्बल मदद फरमा, तमाम दुनिया में अमन कायम फरमा, फितना फसाद से महफूज फरमा, हर गैर मुस्लिम को ईमान नसीब फरमा, गुनाहगार को तौबा नसीब फरमा, नेकोकार को कबूलियत नसीब फरमा, जो तेरे तालिब हैं उनको अपनी रज़ा नसीब फरमा, अपनी मारिफत नसीब फरमा। या अरहमर राहिमीन, इस्लाम की ज़िंदगी, ईमान का ख़ातिमा नसीब फरमा, नेकोकारों का हशर नसीब फरमा। या रब्बल आलमीन, जो लोग यहाँ आए हैं नहीं आ सके, जो बहनें बेटियाँ सुन रही हैं, सब की हाजात जायज़ मुरादें पूरी फरमा, सब की परेशानियों को या रब्बल आलमीन दूर फरमा, उलझनों को हल फरमा। या अरहमर, हर एक के काम में बरकत अता फरमा, हर एक के कारोबार में बरकत अता फरमा, गुनाहों से महफूज फरमा, नेकी की तौफ़ीक़ अता फरमा। या बड़ों पर शफ़क़त और रहमत और राफ़त करने की छोटों पर तौफ़ीक़ अता फरमा। या अरहमर राहिमीन, या अरहमर राहिमीन। व सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़ि सय्यिदिना व नबियना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन। आमीन। माशाअल्लाह।